Hello, guys. A very good evening to all of you, those who are here. So, myself, Kartik Mathur from Coding Blogs, and I welcome you all to this stream where we are going to learn about the backtracking. And this is one concept that I assume that बहुत लोगों को डर भी लगता होगा. ओके, मतलब पता नहीं ये क्या चीज़ है. और सबसे पहले तो नाम सुन के डर लगता है बैक ट्रैकिंग, मतलब ऐसी क्या चीज़ होने वाली है बैक ट्रैकिंग के अंदर. सो जस्ट लेट मी नो ऑल दोज हु आर हेयर एंड ऑल दोज हु कैन listen to me. So just let me know in the comment section ताकि मेरे को पता लग जाए that you all are here itself. दिख रहे हैं आपको कमेंट्स वगैरह? So you can let me know in the comment section so that I'll know that you all are here, and I'll probably start. Okay. Vanshita says hello, hello. Abhay, hello. Akshat. Hello. Shivam Kumar saying. Okay, so you want me the session? Do you want the session to be conducted in English or Hindi? You guys can let me know about it, and we can do accordingly. Whatsoever is convenient for you, we'll do that. Uh, Hi, Fiza. Okay, hello, Vasundhara madam. Uh, Hello, Kareem. Okay, great. So, all those who are here and they are pretty much, I am assuming you all are excited to learn backtracking. If you haven't started, don't worry, it's going to be fine. You would get an idea about what backtracking actually is all about, and why backtracking is something that companies do uh, check when you are going for the interviews and placements. Uh, Okay, so there are the people those who are saying English. So there's someone who don't know Hindi. That's fine. We can start. I am unable to solve backtracking question. Don't worry, Vanshita. You'll be able to solve the backtracking question as well. Which language do you teach? I teach C++. I teach JavaScript. And what language do you want to learn? You should tell that. So this is not going to be language dependent. In case you know Java, you can easily write the code in Java. Whatever I'll tell you, we'll discuss the logic, and that logical part can be implemented using any language which you know. So that's not going to be an issue. Okay. So all right. So I'll start, and I just like to know that all those who are here, do you have any idea about recursion? Have you studied recursion earlier or not? Or this is the first time you're going to attend the recursion backtracking class and you haven't done anything yet? Okay. So you do code in Java, that's fine. What about others? You guys are from which college and which year? So let's just have some introduction before we'll start so that I'll know about you guys, okay? Uh, yes, okay. So Mohammed Siddiqui knows about recursion. Great. And studied. Akshay says studied. Okay. Mayank says okay. 2020. What? Okay. So IG did W. Second year, Jamia Millia Islamia. Great. Third year. Okay. So I am assuming your placement and internship season is near, and the recursion backtracking is going to make things better for you in the interview rounds. If you know that you will be getting a question from dynamic programming, if you know recursion, this is going to help you a lot in terms of DP as well. Okay, Vanshita is from first year, so you have ample amount of time. You can learn each and everything and probably crack Google as well. Whichever company is your dream company, you'll be able to crack any company that you want. So that's the benefit of starting at the early years of your graduation. Okay, so let's get started. Let me just share my screen and do let me know. Okay, DTU first year COE, great. So don't worry if you haven't done any programming yet, so you would get the idea of what backtracking is all about, because see, this is the place where you would know whether these things are getting your full attention or support or not. Okay, if you are having a great time watching the session and if you enjoy whatever I'm going to tell you, then probably you are someone those who can actually move and start your career in coding. So let me just start sharing my screen. So let me know if my screen is visible or not. So again, welcome, and let's get started. Okay, so we are going to start with the backtracking today. So in the earlier session, all those who haven't watched it,
You can go and you can watch. I took one class recently that was on the master recursion class. No, so you don't have to go right now, so you can continue this part later on, and you would be able to understand what recursion is. If you haven't seen that, you should watch it. You'll get some basic idea about recursion as well. For now, all those who are watching live, they can continue, and let's start. Okay, great. It is visible. Okay, Abhay says. So see, can you guys explain me what is backtracking? Can you guys explain me the meaning of this backtracking? Let's not take the concept of backtracking in terms of programming language. Let's try to understand what actually this means. What is backtracking? If any one of you have an idea, do let me know. And in case you haven't shared this particular stream with your friends or your college groups, so do go and do let them know about this as well, because I'll be taking regular sessions. And if you guys want some session which you want to learn and you want me to take some session on that, so please let me know about it. Going back to the original point. Okay, so Piyush Malviya says that backtracking is going back to original point. So, okay, I think this is a valid answer, but not the exact thing that you should that I was looking for. Yeah, but somehow I can buy it. Okay. What about others? No idea about whatsoever this backtracking means, and what the hell this actually means. Okay. So let me tell you about this in a very simple manner. Very simple manner. So, have you ever done a robbery? No, I wouldn't say robbery. Have you ever made a theft? So, right. So, I'll be teaching you how to do a robbery now. Okay. So, see. So, what exactly happens? So, robbery, I would say chori. Chori kari hogi. Matlab, I am pretty sure you must have done this thing. So, suppose that if you are going to rob a bank, let's rob a bank. Okay, so this is not something which you should take seriously. मतलब करियर मत बना लेना बैंक रॉबरी को, but yeah. So let's see how to rob a bank. So suppose that if you have a grid, or let's say if you are planning to rob a bank, and there are certain rooms inside the bank. So this is something which I explain, and people quite relate to it, not because they have experienced it, but yeah, this is something which is quite common, right? So yeah. So let's correct it. So it will be robbery. Okay. So let's see what this is going to be. Okay. So let's say this is a bank. I'm writing the coordinates of each and every room so that it is visible to you guys. Suppose that now there is the money, right? There is the money bag over here which you need to rob. Now you are a thief. Okay. You are a thief, and consider that everything is in the dark right now. Okay, consider that it's the night time, and you have to rob this particular bank. So how you would make this robbery? I'd like to know from you guys, like कैसे करोगे चोरी इस बैंक के अंदर? If you are going to rob this bank, how would you make the robbery? Hello Sharad, how are you? I think you are the same guy. Okay, great Sharad, nice to see you in the stream. So, see, what happens is when you go to rob a bank, you will actually go, because everything is dark. You can't see. So, you will turn on the lights, right? You will turn on the lights. You will go, you can probably go to any other path, and finally, you will reach this particular money that you want to rob. So, while going towards this particular bag of money, what you did, you turned on the lights of every room. Now, does it make any sense that you, of course, you are not interested in getting caught, so, and you would not want to leave any जैसे बोलते हैं proof, right? You would not like to leave anything behind so that you can be caught. So what you will do while going backwards, right? So while leaving the bank, what you will do, whatsoever light you opened up, right? So while going back, वापसी जाते हुए क्या करोगे? You will actually क्लोज दीज लाइट्स. बंद करके जाओगे ना, या ओपन खुला, मतलब लाइटें जला के छोड़ के जाओगे?
मतलब धूम का वो जो छोड़ते थे, आई डोंट नो व्हाट दे यूज्ड टू लीव, वो एक सिंबल छोड़ के जाते थे। हाँ, विद अ गन, ऑफ कोर्स यू विल गो टू रॉब अ बैंक विद अ गन। बहुत सही, नाइस 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 थिंग। बट अगर पूरा बैंक बंद है, यू नो दैट बैंक इज क्लोज, नो वन इज देयर एंड यू वांट टू रॉब इट, देन ऑफ कोर्स you don't need a knife or a gun. You are pretty safe. Yeah, you'll be just opening the lights and you'll be just trying to rob the money. Once you have robbed the money, while going backwards, you would actually turn on the, oh sorry, turn off the light. So did some task you did some task and the task was to turn on the light. Right, this was the task. You turned on the light. And while going backwards, you need to shut them off. While going backwards, you need to shut them off. Undo the things you did. This is what backtracking is all about. Save electricity. Yes, you need to save electricity. Although you are robbing a bank, but yes, somehow you are environmental. You care about environment and you want to turn off the lights. So this is what exactly the backtracking is. Whatever you do while doing certain things, when you are going back, you need to undo all the changes that you made. This is the simple concept of backtracking, right? So I hope that this thing is clear to everyone, that what exactly this means and what exactly backtracking means. Do you get, are you getting the point of this backtracking, that you need to do this thing because this seems obviously logical when you are trying to rob a bank? समझ आ रही है इतनी बात? इतनी चीज सबको क्लियर या नहीं? इसमें किसी को कोई दुविधा, कोई समस्या, any issue relating what backtracking is all about? I am pretty sure, मतलब open in the chat if you know or if you got what I said. मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला पार्ट भी रखता है, वरना बोर हो जाओगे। तो अब थोड़े से यूनिक कीवर्ड्स बोलेंगे, मतलब ऐसे नहीं यस यस वैस नहीं। हाय श्रीधर, ओके क्लियर क्लियर है, फिर क्लियर बताओ। नॉर्मल से क्लियर वर्ड बोल रहे हो, क्या करें क्लियर का? राइट, तो हेलो नसीफ। नसीफ, बैक ट्रैकिंग मीन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू रॉब अ बैंक, while entering the bank you would turn on the lights. Assume that it's the night time. You turned on all the lights and you went where the money is kept. You robbed it. And while going backwards, what you did, you actually turned off each and every light that you switched on earlier. So this is the backtracking. While going to rob the money, you turned on the lights. And while leaving the bank, you actually turned off each and everything and you went home with the money. You need that, okay, your work needs to be done. That doesn't matter, okay. चमका, yes sir, okay, ठीक है, बराबर, right, exactly, this must be barabar, okay, Dhruv. Now let's try to understand how this backtracking concept can be applied to a problem, and where this thing actually create an issue when we are trying to solve some question. So the basic question which you need to understand, or the things that you need to know when you are trying to understand backtracking, is there is something which is called as permutations, right? So this is something which you already know, but there are many students those who struggle with this concept of backtracking and they are not able to relate to permutation. So let's try to understand what exactly this thing means. So basically it's going back after execution of a task. So no, Arav Gulati, it is basically uh going back after doing a task and undoing the things that you did. So बैंक में घुसे, लाइट जलाई, चोरी करी, वापसी जाते हुए लाइट बंद करके जाना जरूरी है ना? दैट्स इट, मतलब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम खुद सोचो, लाइक जस्ट सपोज दैट इफ यू आर ट्राइंग टू स्टील मनी फ्रॉम योर लेट्स से ब्रदर्स पर्स और योर सिस्टर्स पर्स, कुछ भी चुराना है, तो what you'll do, let's say if they are sleeping, you'll enter the room, you'll turn on the lights and you'll search for the thing that you're looking for. And while leaving, of course you need to shut the light off, otherwise you would be getting caught. So सबूत नहीं छोड़ने वापसी जाते हुए ना, you should not leave any सबूत. This is what backtracking is all about. एक ही दिल है सर, कितनी बार जीतोगे, जितनी बार तुम बोलो, बताओ, मतलब ये देखो, ये बोल रहे हैं
मतलब एक ही दिल है सर, कितनी बार जीतोगे बताओ, कितनी बार जीते? चलो ग्रेट. Yeah, so let's see what permutation actually means. So the if we have a string, let's say A, B and C, I want to print all the permutation of this string. So this is the very basic question. See, we are starting with the backtracking. We are not moving on jumping towards the most advanced questions, but how to start with it, you should know about it. So what are the permutation? If I'll ask you, okay, so the first permutation is ABC only permutation, or you would see something which is called as anagrams. So don't get afraid when you hear this word, right? Don't get afraid when you hear this particular word. This means permutations or anagrams, right? So ABC is the one permutation, so I can actually rearrange the words and I can create some other string. So I can have A C B, I can also have B A C. I can have B C A. I can have C A B C B A. These all are called permutations. So I'll tell you that, okay, let's say, मतलब कई बार बोला जाता है कि भाई हम ना let's say आपको permutation के 5 questions कराएंगे. तो I'll tell you how actually that thing happens. If you know the concept of backtracking, you should be able to apply it to many questions just by solving one question. थोड़ी सी बस बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है. If you'll use your brains, you'll be able to apply this concept of permutations to multiple questions. Let's see how. So how to print permutation first? That's the first question. So we are going to do permutation question first. So I'll tell you that, okay, just by solving one question, how can you solve 10 questions overall? तो मैं 10 क्वेश्चंस बना सकता हूँ यूजिंग दिस परम्यूटेशन. नॉट एग्जैक्टली 10, बट देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट दिस एक्चुअली मींस. सो आई विल हैव दिस स्ट्रिंग एबीसी. ओके, सो सी the recursion says, right? So try to relate it to the recursion only, because we are doing recursion backtracking. So try to relate it to the recursion. So recursion says मैं काम करूंगा नहीं, मैं काम करूंगा नहीं, करवाऊंगा. So in English, this line means I'll not do the work, but I'll make someone else do it on my behalf. Of course, मतलब बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, तो लग रहा है छोटा सा लिखा है इसमें इतना बड़ा. हाँ, तो in terms of recursion, this means I'll not do work, I'll ask someone else to do on my behalf. So yes, this is what the exactly you need to do. So see, in this particular string, what you can see, I have to print all the permutations and I don't know how to print them. So what I'll do, I'll consider the first character. I need to print the permutation. I need to rearrange the characters. So I'll say, okay, I'll just work for the first character. I'll just work for the first character. I'll just work for the first character. And for the smaller string, recursion needs to do the work. If you remember the previous video of recursion that I taught, so in that I told you, you need to break the bigger problem into the just smaller problem. So recursion is very simple. Break bigger problem into one smaller problem, right? Into just one smaller problem. Not, you should not break it to the smallest problem, just one smaller problem. So over here I can see I need to print the permutation of it. But what are the permutation? That means rearrangement of the characters. In this I can easily say, if I'll talk about the first character over here, so see, there is one A, then B, then C. Just do the work for one character. You need to do the work for one char and for the smaller string, right? So if there are n characters, if you did the work for one character, for n minus one character, who will do the work? It will be done by recursion. Simple. It's as simple as it is. एक का काम तुम कर दो, बाकी का काम रिकर्जन करेगा, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है. This is what exactly the permutation actually means. So now let's try to see what can be done. So see what I'll do. I'll keep the character A on the 0th index or the first position, and the remaining work would be done by recursion. I'll keep the B character on the first position, and for the remaining string, recursion will do the work. I'll keep C character on the first position, and for the remaining string, recursion will do the work. This is what exactly it means. So let's go and let's try to figure it out. How can I actually code it? So
we need to write something which is called as recurrence relation. Okay, recurrence relation is the heart, right? Or I would say it is the everything that you need in order to solve a recursive problem. Even if you are trying to cheat, let's say if you are thinking that okay, I need to cheat in my exam, I need to cheat in, let's say, any test of programming that is taking place, and there is a question which comes and it says you need to solve it with the help of recursion. So you just need the recurrence relation. If recurrence relation is with you, you would be able to solve it very easily, right? So chalo, let's do it. Like fixing the first character of every, exactly, Konark, exactly. शिकंजी में पड़ता शिकंजी में पड़ता है जीरा, कार्तिक भैया एकदम हीरा, मतलब वाह, शाबाश। ये लो, एंटरटेनमेंट इज हेयर। ओके, तो ऐसा नहीं है क्लास में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होगी, एंटरटेनमेंट भी पूरी है। तो ठीक है, नाइस। दीज आर फन एक्टिविटीज दैट वी नीड टू फॉलो। ओके, ऑफ कोर्स द पढ़ाई तो होती है, बट जहां मजा और पढ़ाई दोनों आए, दैट इज द प्लेस, राइट? तो चलो, let's start and let's try to figure it out how to solve it. So we have this string over here. So over here we have this string A, B, and C. Then we have, of course, null. So all those who don't know what a string in C++ means, so set of characters terminated by null is the uh, string in C++. So how long is this session? So this session is of about an hour or so. So we'll solve this question, subsequences, and then I'll tell you all the variations of, sorry, permutation. Then I'll tell you all the variations that can be formed, and you will be able to do very well in this particular task. Okay, so don't worry. We'll try to keep it short so that you should not get bored about it, and we'll try to cover maximum concepts. Okay. Sir, depression बहुत है. Depression is a big word. Just keep on practicing. Just keep the hustle going on, and you would be able to land wherever you want to go. Just don't give up, right? Don't give up. You would be able to crack one very good company very soon. Just keep on working on it. So what I need to do is, see, the thing is simple. It says यार पहले पोजीशन पे ना एक एक करके सारे कैरेक्टर रख दो. So what I want to do, I want, okay, this string should get the first character as A, or the 0th character should be A. Then for the smaller string, recursion will do the work. Then the first position or the 0th index should get the character B, and the smaller string would be solved with the help of recursion, right? So these boxes are something that I don't have to take care about, or I don't have to worry about. These would be solved by recursion. Okay, so let's go and let's see what is the next step. So I'll say, okay, now let's keep the C character on the 0th index, and remaining work would be done by recursion. So here I'll have B, here I'll have A, and null is of course there. So this would be solved with the help of recursion. That's it. This is what you need to do. You need to bring one character at the 0th index, first A, then B, then C, and recursion will do all the work for the smaller string. This is exactly what is needed. Okay, don't understand backtracking. No worries, you will get soon. Yes, don't keep it short. Harsh says, okay. No worries. Let's see. पहले पढ़ते हैं, पढ़ना तो शुरू करें, फिर ही देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता. Let's get started and let's see what exactly is going to be. See, this problem is going to give you an overall idea about how backtracking works and what all things you can do. If you are comfortable with these sort of problems, then probably you can move towards the newer problems of backtracking as well. Now let's see the entire working of this as well. Okay, so I'll just copy paste this particular part over here so that I can show you the exact working of what is going to happen and how backtracking takes place. See, we need to understand the entire cheese. आधी अधूरी चीज समझ के कोई फायदा नहीं होता. You need to understand what is going to happen exactly. Now let's try to build the recurrence relation. So see, in recursion, this is very common. Just solve the problem once it's working, then see how actually you coded it and how it's actually working. That's the most important thing when we are using this. So
This is the position. Let's say I am on the ith position, and my main task is to bring all the characters A, B, and C onto the ith index, which is the 0th index currently, and the rest of the work would be done by recursion. Okay, so let's see how it's going to work. So I'll write recurrence relation over here itself. So we have one array A, we have one array ARR, I would say, because I have one keyword A, or I have one character A in my array. So I have this index I, and then the next thing is I need to print all the permutations. So I think that's it. We don't need anything else. So we are trying to build something which is called as recurrence relation. So in case you are not familiar with recurrence relationship, then it's completely fine. You just focus on the concept. Don't focus on the code. You should understand what is happening. We are trying to bring each and every character on the ith index, and then the smaller string needs to be solved by recursion. This is what I'm trying to do. That's it. राइट, तो काम क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स और सारे कैरेक्टर्स को 0th पोजीशन पे ला रहे हैं, जो ऊपर किया था. देखो, I brought the character A on the 0th index. This is the array, okay? So 0th index पे एक बार A को लेकर आए और छोटी स्ट्रिंग का काम रिकर्जन को बोला. फिर 0th पे हम B को लेकर आए, छोटी स्ट्रिंग का काम रिकर्जन को बोला. फिर हम 0th पे C को लेकर आए और छोटी स्ट्रिंग का काम रिकर्जन को बोला. This is what I am trying to do. Now, for this, I am trying to create a, I would say, recurrence relationship. एक basically functionality हम बना रहे हैं that can be used. तो हमें वो फंक्शनैलिटी को यूज करना है इसके अंदर, कि हम एक एक करके कैरेक्टर फर्स्ट पोजीशन पे लाएं, तो लाएं कैसे, ये हम करना चाह रहे हैं. सिद्दीकी, मोहम्मद सिद्दीकी, आई होप नाउ यू गॉट इट. सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं. देखो, मुझे पहले इस पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस पे ए वाले कैरेक्टर को लेकर आना है ना, बिकॉज ith पोजीशन से ही शुरू हो रहा है, तो मैं पहले ए को ए की पोजीशन पे ही लेकर आना चाहूंगा. राइट, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दिस रेकरेंस रिलेशनशिप. तो इसको उठा के हम इधर ले चलते हैं थोड़ा सा, और लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. तो देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने जे को स्टार्ट करा आई से, और मैं बोल रहा हूँ चलो भाई ए की पोजीशन पे पहले ए को ही रख देते हैं ना. तो ऐसे ओके, आई विल कीप द ए कैरेक्टर ऑन द 0th index position itself. अब ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद रिकर्जन, थोड़ा सा लग रहा होगा भाई ये क्या चल रहा है, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए रिकर्जन पढ़ना पड़ेगा. ऐसे अपने आप चमत्कारी चीज नहीं होती, आधी अधूरी चीज समझ आए. कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना, डोंट फोकस ऑन कि इंटरनल वर्किंग कैसे चल रही है कोड की. कॉन्सेप्ट तुम्हें जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो तो समझ आएगा. देखो, हमने बोला कि चलो भाई एक काम करते हैं, पहले ना ए वाले पोजीशन पे ए को ही रख देते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक जे को स्टार्ट करा है, जे स्टार्ट्स फ्रॉम आई, क्योंकि पहले ए को ए पे रखना है, तो शुरू में जो कैरेक्टर पड़ा है वो ही रहने दो, उसको चेंज तो करना नहीं शुरू में. लेट इट बी लाइक दैट, पहले पे ए को ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जब ये हो गया इतना काम, तो फिर मुझे छोटी स्ट्रिंग का काम रिकर्जन से कराना है. छोटी स्ट्रिंग अगर मैं बोलता हूं, सपोज करो इसके अंदर टोटल ये n कैरेक्टर्स हैं, तो छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, छोटी स्ट्रिंग वुड बी दीज n-1 कैरेक्टर्स. ऑफ कोर्स नल को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, नल इज नॉट नीडेड इन दीज कैरेक्टर, बट हाँ, मतलब ऊपर अगर मैं बोलूं 3 कैरेक्टर्स हैं, छोटी स्ट्रिंग इज 2 कैरेक्टर्स का काम रिकर्जन करेगा. और 2 कैरेक्टर की जो स्ट्रिंग है वो कौन से इंडेक्स से शुरू होती है, अगर मैं i इक्वल्स टू 0 से बड़ी स्ट्रिंग का काम कर रहा हूं, तो छोटी स्ट्रिंग का काम तो कहां से शुरू होगा, i इक्वल्स टू 1 से. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द वर्क ऑफ रिकर्जन इज. मैंने बोला ठीक है, चलो भाई ये वाला काम आप करके दो, और यहाँ पे अभी b है और यहाँ पे अभी c है, इतनी स्ट्रिंग का काम हमने कर दिया. दिस इज व्हाट आई हैव डन. आई हैव केप्ट द a character on the 0th index or ith index, and I am asking recursion to do the work from i plus 1th index. यहाँ पे i था, और इसको अगर मैं i dash बोलूं, तो i dash is nothing but i plus 1. राइट, अर्लियर i was 0, नाउ i is 1, तो i plus 1 हो गया ना, वो एक पोजीशन आगे बढ़ गया. दैट्स इट. इतनी बात समझ आ रही है सबको जो मैंने यहाँ पे बोली. a को 0th पोजीशन पे रख दो. 0th पोजीशन पे रखने के बाद ये जो हमारा i डैश है, i डैश से काम हमें रिकर्जन करके देगा, जो कि एक पोजीशन आगे है. i डैश इज नथिंग बट i plus 1. डिड यू गेट दिस मच और नॉट? इतनी बात सब रिलेट कर पा रहे हो? I am assuming of course you would be able to relate this much, कि हाँ, मतलब भाई छोटी स्ट्रिंग तो आगे n-1 कैरेक्टर्स होते हैं, और छोटी स्ट्रिंग इज दिस, एंड दिस स्ट्रिंग का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम i plus 1. यस,
Konark says yes. So I want everyone to reply. I don't want कि सब लोग शांत शांत बैठे. At least chat के अंदर सब लोग बता सकते हैं समझ आ रहा है या नहीं, ताकि मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है ना, हाँ, कि और ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं. बिकॉज यू आर द वन दोज हु आर लर्निंग. तो इफ यू वांट मी टू ब्रिंग मोर सच प्रॉब्लम्स देन ओनली तभी हो सकता है जब तुम्हें ये वाली चीज समझ आए, राइट? तो बताओ सब लोग जितने बैठे हैं, आई वांट एवरीवन टू आंसर. ओके, हजीक मोहम्मद हजीक बोल रहा है यस. वंशिता इज सेइंग आल्सो यस. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? खाना खा रहे हो क्या? आई एम प्रीटी मच श्योर खाते खाते तुम सेशन देख रहे हो, इसलिए तुम रिप्लाई नहीं कर रहे. समझा समझा. ओके, हर्ष मुन दादा. ओके, नाइस नेम मुन दादा. Okay, so this much is done. Okay, now what I'll do for the next step, this much is done. Now I have done this work. Okay, for j equals to this, I did it. In the next step, what I'll do, I'll ask recursion. Okay, this much is done. Now I need to bring. Now see, after this work is done, what I need to do, I need to return back, and I'll assume that okay, that part is done. मेरी तरफ से वो चीज हो चुकी है. वी डोंट हैव टू वर्क एनीथिंग एल्स. बस मेरी तरफ से वो हो चुकी है. अब मुझे अगला काम क्या करना है? अगला काम इज ऑल्सो वेरी सिंपल. अगला काम कोई मुश्किल काम नहीं है. अगेन हमारी बड़ी स्ट्रिंग छोटी स्ट्रिंग तो सेम रहेगी, बट अब जो 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर आना है दैट इज कैरेक्टर बी, ना कि कैरेक्टर ए. तो अब मुझे जे को आगे लेके जाना पड़ेगा ना. तो मैं एक बार जे का लूप लगा रहा हूं. तो जे स्टार्ट होता है आई से, एंड ये जे हमारा आगे जाएगा जब तक वो जे नल तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि मुझे एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को आगे लेकर आना है, और एक एक करके अगर ए के बाद बी पे सी पे सब पे जाना है तो यू नीड टू राइट अ लूप. तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ स्ट्रिंग ओवर हियर, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एबीसी स्ट्रिंग बना रहा हूँ. तो इफ यू डोंट नो द सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस, इट्स कंप्लीटली फाइन. यू कैन कोड इट इन जावा एज वेल. इफ आई राइट अ लूप, तो आई सिंपली राइट ना, इफ a of i is not equals to null, so what I need to do, I can print it. So what this does is it will go to each and every character one by one and it will print it. So I went to A, then B, then C. So I need to bring all these characters to the front, which is the ith index. So let's try to do that as well. So this is what I'm trying to do. So I started the J from ith index. So let me write J over here. So let me write I over here and I starting from 0. So what I'll do, I'll simply say, okay, I need to bring all the characters to the ith index one by one. So let's see how to do that and let's try to understand it. So here what I'll do, so I'll say, okay, see out, I will bring the character, which character I'm talking about, A of j, to which index, ith index, right? So I can write index over here as well. So let's see. Let's see the working of this. Okay, let me just build this. So see, first I'll bring the character A to the 0th index, then character B to the 0th index, then character C to the 0th index or the ith index. So this is my motive. I need to go to every character one by one. So I started from the ith index, right, which is this a 0th index itself. Then I went to B, then I went to C. So I need to bring all these characters one by one to the front. So for that, I'll have to write a loop because I need to go to every character. So that's why I have written this loop over here. Now the loop is over here. So I am getting every character on the jth index. So the character I can pick easily. So this is the character which is A of j. So what do I have to do for this character? I need to bring this character to the ith index. So I can typically swap it with the ith index. So now what I'll do, my j is on the first index. So I'll swap it with the ith character. So if I'll swap it, what will happen now? So in the next go, what I'm trying to do, I'm trying to bring the character B to the front. So if I'll swap it, so A will reach onto the position of B and this would be the string. Now again, I have kept the B on the 0th index. Now from this I dash onward, and I dash is nothing but I plus 1 again, because over here I was 0 and this value is again 1. From I dash, who will do the work?
Recursion is responsible for doing the work. Recursion needs to do the work from I plus 1 position. Now, if this thing is also done, then I need to again see what I did. I actually swap the ith index character with the jth index character. Then I'll ask, hey recursion. तो यहां तुम बोलोगे हे रिकर्जन, बाकी का काम तू कर दे. मेरी अजम्पशन है ना, दिस इज हाउ यू डू इट. बाकी का काम तू कर दे. So don't mind, I'm writing it in Hindi. So I'm asking recursion to do the work on my behalf. So if recursion will do the work, so when recursion will return, okay, so recursion will do the work, and after doing the work, of course, recursion will return. So once the work is done, then it will return. So once it returns, so what I need to do? So I don't know whether you have studied this way or not. So over here, so if you'll return, so what I'll do, I'll then ask, okay, you have kept, so I have kept the B on the 0th index. Now the next part which comes into the picture is J will move ahead. So once we'll return, then J will move ahead and J will reach onto the index 2. Then I'll ask recursion, okay, again swap the ith index with the jth character. Now J is this, I is this. Again swap it. So if you will swap it again, so what will happen? So now C will come here. It will be BA. Then again, you have done it. You have kept the first character at its correct place. Now you'll ask recursion, okay, now I dash is 1, which is I plus 1. You will ask, hey recursion, मेरे बाकी स्ट्रिंग का काम कर दे. बाकी की स्ट्रिंग का काम करके जब वो वापस आएगा और तुम वापसी यहां से जब रिटर्न करोगे तो जे कहां पहुंच जाएगा? On index 3 at this position. This condition fails. So A of J will become equals to null. So now you would exit this loop. So your main motive over here was quite simple. You were trying to keep the first position secured for yourself. You did the work for character A, and the rest of the string was taken care by the recursion. You did the work for character B, and the rest of the string was taken care of by by recursion. And then you kept the character C on the first index. The rest of the string was taken care by recursion. So now I am pretty sure this must be quite overwhelming. समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये वाली चीज हो क्या रही है, कैसे वर्क करेगा, क्यों वर्क करेगा. मैंने एक कैरेक्टर को 0th इंडेक्स पे रख दिया, बाकी छोटी स्ट्रिंग का काम रिकर्जन को बोल दिया, तो चल कैसे रहे, हाउ इट्स वर्किंग, नहीं समझ आ रही है बात. तो ये वाली चीज इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तुम्हें एक स्ट्रिंग का काम करना है, एक कैरेक्टर का काम करना है, बाकी का काम रिकर्जन करेगा. अजम्पशन, प्योर अजम्पशन होता है, प्योर अजम्पशन. एंड टिपिकली इस तरह के क्वेश्चन जब आप करते हो तो यू फील इट ओके, दिस इज समथिंग विच इज नाउ क्वाइट ऑब्वियस, आई कैन एक्चुअली रिलेट इट टू. तो हमने क्या करा, देखो पहले एक कैरेक्टर उठाया, ए को 0th इंडेक्स पे रखा, और बाकी आई प्लस 1 या आई डैश से काम रिकर्जन को बोला. फिर मैंने बी को रखा, फिर बाकी आई डैश से काम रिकर्जन को बोला. फिर मैंने सी को शुरू में रखा, फिर बाकी आई डैश को काम रिकर्जन से बोला करने को, विच इज आई प्लस 1, एक पोजिशन आगे से काम. दिस इज वॉट आई हैव डन, एंड ये हमारा लूप था. So I explained you this over here that okay, you need to write a loop which starts from the ith index and it will go to every index one by one till the string is present. So you see over here, when I am printing the jth character, where I need to bring this jth character on the ith index. Now I am trying to bring each and every character onto the ith index. But how is that possible? So to bring it onto the ith index, we need to do swapping. So we swap it in order to bring it to the ith index. Once the character is on the ith index, right over here, when you have kept A, who would do the work of this smaller string? Recursion. So you ask the recursion to do it. Now, once you have kept the character on the 0th index, which is B, now who will work for the smaller string? Again, you will ask recursion to do it. Once you have kept the character C on the 0th index, who would do the work for smaller string? Again, recursion. Now, once this thing is done, and it will return, right? After doing the work, it will return. Of course, once you are done with the work of this entire string apart, it will return backwards. And then you will again ask it to do the work for B character. Then it will return again.
You will ask it to do the work for character C on the first position, then it will return again. Now J will become, it will reach null. So once the J reaches null, you would of course exit this loop from here. After you exit the loop, what do? You will also return because the entire work is done. Now this is a very high level approach to the problem that we have studied over here, right? Right, is this thing clear to everyone? चलो छोड़ दो, अभी ट्रीज ही करता हूं, बाद में बैक ट्रैकिंग देखूंगा. उल्टा करना, पहले बैक ट्रैकिंग करना फिर ट्रीज देखना, उल्टा नहीं. You should do back tracking first and then you should move on towards trees, because tree is something that uses recursion very frequently. You would find very less problems of trees that can be done. Of course there are problems which can be done iteratively on trees too, but recursion is going to be the major player in trees as well. Is this much clear to everyone? Please let me know. ये बात सबको समझ आती है इतनी कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, what is happening? हाँ या ना? Is this thing clear to everyone or not? Please let me know. If this thing is clear, then of course we don't have to do much. That's it. This is the entire approach that needed to be done. Okay, यही entire approach थी that we were looking for. So now I'll go and I'll do this. Okay, yeah, let's come to that part as well. We'll come to that part as well, and of course you would be able to understand it by yourself as well. I don't have to explain it, you'll be getting it easily. So of course we need to print permutation, so I don't have to worry about the things. Okay, so I'll take this over here. So we'll have base case over here, then we'll have recursive case over here. This is typically that I write because it's easier to understand, that you should not forget writing the base case. Base case is really, really important. So over here, let's take character A, array A, which is ABC. So you can take input from the user as well. I am taking it manual input. So I'm taking it manually. Okay. Now I'll call the permutations. I'll pass the string, and the index I need to work on starts from 0. Now, the recursive case is quite simple. You need to write a loop till the time a of I is not equals to null. Of course, I need to write it j. So let's make it j over here, and let's write j over here. So now what I need to do, I need to bring the jth character on the ith index. So first thing is bring the jth character on ith index. This is the crux of what we were doing. Okay, Konark says I started with the recursion after sorry, I started with trees after realizing that trees is solely based on recursion backtracking. Here I am. So no worries, you would be able to understand everything. So let's see. Now what I'll do, I'll simply swap a of I with a of j. Once this is done, I'll ask, hey recursion, छोटी string का काम 2 कर दे. रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, देखो ठीक है, तो मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं होता. यू नीड टू अंडरस्टैंड. और अगेन दिस इज assumption, you don't have to understand how it's working. So what is recursion? Again, since I told you in the previous class as well, recursion is nothing but a function calling itself is recursion. So I'll call permutation, and of course I need to do work from I plus 1. So here my I dash is nothing but I plus 1. So for the smaller string, recursion will do the work. That's it, khatam. यही कोड है permutation ka. That's it. So no, I is here na. So Hasik, I is present over here. You don't have to worry about I, because user is providing the value of I. So I starts from 0, and whatever your recurrence relation is dependent upon, that thing is going to be in the argument. Since character array A and the I is required for the recurrence relation, I need to take them as argument. Otherwise, it will not work. Uske bina kaam nahi ho sakta. Now, if this thing is done, see what is the base case. I have told you this thing earlier as well. Base case is the smallest problem. Base case is the smallest or the simplest problem. Now, what could be the smallest problem? If I have a string, what could be the smallest problem? That this string is containing nothing. It's empty. If you are having a string that is completely empty,
So what you'll say for empty string, so this is null. What is the permutation? I'll say it's null only. For empty string, what is the permutation? If the value of I is 0. So in this case, what is the string? What is the permutation? It's the empty string only. So what I'll do, I'll simply print the empty string. So because this array contains the null inside of it, so I'll simply print it and I'll simply return. I don't have to do anything. So this means if a of I is equals to null, that means there is nothing which is present inside the string. So you will print the string and you will simply return from this point. Base case is meant for something that, okay, you need to do the solution or print the work that you have done, or you need to print whatever the value over here is going to be. Because on the string being null, I'll say, okay, the permutation is going to be null, and then I'll simply return. Because this is a permutation and its return type is void, so I'll simply write return without any value. So that's how this thing is done. Okay. Okay, Lavi Agrawal says we need to swap again. Okay, permutation instead of permutation. Instead of, Acha, sorry. So I have written permission. So this needs to be permutation. Okay, yeah. So it will not be permission. So it read the word from here, which is fine. Like, ठीक है, चलता है इतना. Will this next permutation or just a sequence of that length of string? No, no, this is not the next permutation. Yeah, so I'll be coming to that as well. Now let's try to run it. Let's see whether it is going to give us the correct solution or not. So see, it is not giving us the correct solution somehow, and it is not something which we expected to happen. So what happened over here? Let's see. Let's see again. So it's printing a lot of things over here. What has happened? Just let me see. Hmm. Undo the swap. No, no, I don't have to undo the swap. Just 1 second. Okay. What is happening over here? Is equals to null, C out A and L, and will simply return. It should not print these many values. I don't know why it's printing so many values over here. Okay, let's write it for. No, no, header file is not required. Just let me see why it's printing. Things over here. Way of I is equals to null. Uh, let's see the working of it as well. Okay, just let me explain you the working first. Let's see the working, how it should work. And of course it's not working over here. What is the issue? Just give me 1 second. Is this the issue only? Let me see. No, this is not the issue. I have called permutations, and I have done the swapping part as well over here. Swapped it. Sorry. This needs to start from I. Okay. So I did this mistake. So see, I have written that J needs to start from I. Over there, I wrote that J starts from 0. That's the mistake. Yeah. So sorry. I just made one small blunder, but it's fine. So over here, see, this is giving the correct solution. These two are permutations. These two are also the correct permutation, but this is not correct. Right, these two are repeating. I don't want the permutations and they are getting repeated, so I have actually skipped these two things, BAC BCA. These two are missing. Where are these things? I don't know. ये तो है ही नहीं यहाँ पे. So yeah, you guys are correct. So this is something which is missing. Now what is happening over here? This will give you the entire idea behind how backtracking works now. So I told you one thing. What is backtracking? You tell me. I told you that in a very simpler manner. What backtracking actually means? Over here I have written that did some task, that we turned on the light, and while going back we need to undo the things that we did. हमें उसको अंडू करना बहुत जरूरी है. जब तक अंडू नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा. तो सपोज करो, if we have this string over here which is ABC, right? So this is the string that we have over here. So let me just write the basic things over here, 0 1 2.
So this is string A, B, and C, and then we have null over here. So I'll just copy this over here. Okay. So let me copy it and let's paste it over here. All right. So what I'm trying to do over here is, so we have this index I and I start the index J from here. So I swap A with A and then I ask recursion to do the work for the remaining string. So I swapped A with A. So this much part is done. Then I ask recursion to do the work for the remaining string. And the remaining string starts from the index 1, not 0. So this part is already done. This won't be getting changed. Now, what I did over here again, see, when I'll call the recursion, recursion is going to repeat the same work for everything that I did. तो यहाँ पे हमने j का loop चलाया था ना I से, and it went till the end point. So over here as well, j will start from nothing but I, and it will went till the end. It will go till the end. So let's see what is happening over here. So now again, it will swap the ith character with the jth index, and then it will ask the recursion to do the work for the smaller string again. So this much part is done. Now I'll move one step forward. Now again, the j value will start from I and it will go all the way till the end. Now it will swap the jth position character with the ith position character. It will become A, B, C. And now this much part of the string is done. Now I will move forward and I will reach to the point where it is null. Now, of course, I have shown you that whenever v reaches the value of null, so see the base case. Whenever a of I becomes null, what do we do? We print the string and then we simply return. So over here, what I'm going to do? Over here, I'm going to print the string and the output is going to be ABC. And यहाँ से हम वापसी return कर जाएंगे simply. I don't have to worry about it then. Okay, we did return and it's completely fine. This thing is printed now. We don't have to worry about it. It's done. We got the first permutation, and which is completely fine. Now what will happen? J will move one step forward and it will reach onto the index where it's null. So I won't do anything again. I'll simply return from this point as well. Right? So over here, J has reached null. No, I did not reach null. So I की वैल्यू null पे नहीं पहुंची, तो इसलिए प्रिंट नहीं होगा, वो इंटरनल स्टेट है. अब J एक पोजीशन आगे फिर से जाएगा. So what will happen? I will swap B with C. So now if I swap B and C, what will happen over here? So A, C, B. So these two positions are fixed and my index I will move one position forward. Now J will start again from the index I. I will swap I with the jth position character. Now once this thing is done, I'll write it as, okay, I will move one position ahead and it will reach null. So now what has happened? This is the second permutation. So see, when I reaches null, I need to print the string that I have currently, which is ACB, sorry, not ABC. So I got these two things and they are completely fine. And over here, if you look, so you are also getting these two as the first answers, right? This is working exactly as expected. Now what happens when we will return from here? So if I'll return from the base case, now see, J will go one step forward and it will reach the index null. So again, I has not reached null. So I will return from this position. See, this array has one property. By default, in C++, arrays are passed by, so by default, array are passed by reference. This is a very important concept, and you need to know about that, about this, that whatever changes you will make here. So see, the string has become ACB. स्ट्रिंग चेंज हो चुकी है. यहाँ पे स्ट्रिंग पुराने वाली सेम नहीं रही. जब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स एरे हमारा बाय रेफरेंस गया है, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? दिस विल नॉट बी एबीसी, इट विल बिकम एसीबी. हमें चाहिए क्या था? देखो यहाँ पे आई वांटेड ए बी एंड सी. मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग तो एबीसी थी, बट यहाँ पे चेंज हो गई. अब यहाँ से जब हम वापसी फिर से जाएंगे तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग एबीसी की जगह क्या मिलेगी मेरे को? ए सी बी. तो देखो स्ट्रिंग ही चेंज हो गई. आई हैव चेंज द एंटायर स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग बाय रेफरेंस पास होती है. देखो नीचे जाते हुए मैंने स्वैप किया था किन किन कैरेक्टर्स को? आई स्वैप कैरेक्टर बी एंड सी. तो नीचे जाते हुए जो चेंज करा, दैट मींस इनको स्वैप करा. वापसी जाते हुए उन चेंजेस को अंडू भी तो करना पड़ेगा, ताकि ये स्ट्रिंग एसीबी ना आए, इंस्टेड मेरे को एबीसी मिले.
तो वापसी जाते हुए उन चेंजेस को अंडू करना पड़ेगा, तो आई हैव टू अगेन स्वैप बी एंड सी. सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग इज. वापसी जाते हुए अंडू करो चेंजेस को. This is what backtracking means in simple words. This is what backtracking means. That's it. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग. नीचे जाते हुए जिसको स्वैप कर दिया, वापसी जाते हुए उसको स्वैप करो, ताकि जब यहां से ऊपर वापसी जाओगे ना, तो स्ट्रिंग एसी भी नहीं चाहिए मेरे को. आई नीड द स्ट्रिंग बैक विच इज एबीसी, ताकि अगर मैं अब ए पोजीशन पे अगले कैरेक्टर बी को लेकर आना चाहूं तो बी ही आए आगे, ना कि अगर मेरी स्ट्रिंग चेंज होगी. सपोज करो इफ दिस स्ट्रिंग इज नॉट एबीसी, नाउ इफ ऊपर आके मेरी स्ट्रिंग जो चेंज हो चुकी है ए सी बी हो चुकी है, ये ऊपर वाली. अब देखो मेरा आई पोजीशन तो यहीं पे है ना. अगर मैं जे को अब आगे लेके जाता हूं, तो अब आगे कौन आ रहा है, सी आ रहा है. बट होना क्या था, बी आना था ना आगे. ऊपर हमने जो ये बनाया था, व्हाट वाज हैपनिंग, यहाँ पे बी आगे आ रहा था, बट सेकंड बार सी आगे आ रहा है. तो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. तो इसी वजह से मुझे वापसी जाते हुए चेंजेस को रिवर्ट बैक करना पड़ा, एंड दिस इज कॉल्ड एज बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट. जो चेंजेस करते हुए नीचे गए हो, वापसी जाते हुए उन चेंजेस को अंडू कर देना, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा. तो व्हाट आई नीड टू डू, जो चेंजेस करते हुए रिकर्जन को कॉल किया था, वापसी जाते हुए उन चेंजेस को अंडू कर देना. राइट, so this is backtracking. Undo the swapping that we did earlier. This is the concept of backtracking. Now let's see. Let's try to run it. Now it is working perfectly fine. Now these are the permutations which you can see. No, character arrays are always passed by reference, Konark. So he's asking this question. If we do not pass the character array as reference, then we need not swap the backtracking. Yes, if अगर नहीं होता backtracking में वो by reference, तो नहीं swap की जरूरत थी, but अभी तो जरूरत है. I need them to be swapped, तो इसलिए लगेगी जरूरत. तो I hope that this thing is clear to you. That okay, we need to swap it. Swapping हो जाएगी तो permutations का काम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, and it's working perfectly fine. तो इस तरीके से हमारा काम हो सकता है. क्लियर है सबको ये चीज? Is this thing clear to everyone? How the permutation works? Yes or no? Yeah. Dhananjay, I was just showing you that what was the mistake. And this is what was the mistake, and that's how the backtracking works. आई बात समझ सबको? Please let me know if this thing is clear to everyone. आ गया मजा backtracking के questions करके? Did you enjoy this question? आया मजा या नहीं? Okay, yes. Okay, चलो, that's really great, है ना? It's a good thing that you have enjoyed this particular thing. एंड ग्रेट. चलो सबको आगे समझ. अब देखो इसके क्वेश्चंस ना चेंज कैसे होते हैं. अगर मैं तुम्हें बोलूं प्रिंट ऑल द परम्यूटेशन ग्रेटर देन द सेकंड, लेट्स से इफ आई टेक वन स्ट्रिंग x, print all the permutations greater than this. If I'll ask you print all the permutations greater than bca, how would you do it? This is the second question to this variant. It's very easy. देखो मैं क्या कर सकता हूं. I can make something which is called as vector. If I have to print all the permutations which are greater than BCA, I don't care about the order in which they get printed. I just need to print all the greater things. So I'll take one vector and I'll store it. So in case you are not familiar with vector, no worries. You just need to know that what I'm trying to say here is कि भाई सारे permutations print कर दो जो इससे बड़े हैं. So the output should be this only. सिर्फ ये आउटपुट आना चाहिए और कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए. This is what I am trying to do. तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं. मैंने एक स्ट्रिंग x ली है विच इज BCA. नाउ इस BCA के अंदर मैं ऐसे तो भाई जादूगर तो हूं नहीं मैं, तो मैं एक काम कर सकता हूं. देखो बहुत सिंपल सा, आई कैन डू इट वेरी सिंपली. मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें भी. बड़ा बड़ा आसान काम है. मतलब ऐसे मजा कुछ अलग सा मजा नहीं आएगा. तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करता हूं. दिस इज हाउ वी कैन इनिशियलाइज द, और
create a string using character array in C++. This is one way of doing it. So once you have done it, you can write, okay, you have this string X. So let's make it global so that I don't have to pass it in the argument. Let's ignore vector for some time. So I'll simply write if Y string is greater than the string X, then only we need to print this A, because see, Y and A are same. I have copied this A string into Y. अब ये सेम है तो चलो चला के देखते हैं वही होता है नहीं होता जो मैं चाह रहा हूं. देखा, हमारी सारी वो स्ट्रिंग्स प्रिंट हुई दैट आर ग्रेटर देन बीसीए. उल्टा कोई बोल दे प्रिंट ऑल द स्ट्रिंग्स व्हिच आर लेसर देन बीसीए, तो व्हाट आई कैन डू, इस पे वाई की जगह लेसर लगा दो तो सारी छोटी आ जाएंगी, बड़ी आएगी ही नहीं. तो अब देखो, एक प्रॉब्लम थी, उसके वेरिएशंस देख रहे हो, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्वेश्चन सेम था, आपको परम्यूटेशंस ही प्रिंट करने हैं. बट द ओनली थिंग दैट चेंज्ड इज, भाई इससे बड़े परम्यूटेशंस प्रिंट कर दो और इससे छोटे परम्यूटेशंस प्रिंट कर दो. अब मैंने क्वेश्चन एक कराया बट इफेक्टिवली तुम्हारे 3 क्वेश्चंस हो गए जस्ट बाय एडिंग अ लिटिल ट्रिक टू इट. मैंने कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी बताई है यहाँ पे. आई हैव टोल्ड यू वन सिंपल थिंग दैट भाई ऊपर के प्रिंट करने हैं तो स्ट्रिंग में डाल के कंपेयर कर लो. मैंने ये क्यों किया, क्वेश्चन होना चाहिए ये क्यों किया, ऐसे क्यों कर रहे हो कि मतलब इसको ये चेक कर रहे हो. ये इसलिए किया क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हो जाता है, कैरेक्टर्स के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू नहीं होता है. तो मैंने अपना काम बचाने के लिए स्ट्रिंग में डाल के कंपेयर कर दिया, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया ये चीज करना. इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू डू इट. अब अगर कोई बोले यार एक काम करो, मेरे को तो सारे ना स्टोर्ड चाहिए, सारे बड़े स्ट्रिंग्स को स्टोर करो, सारे सारे छोटे स्ट्रिंग्स को स्टोर करो, तो मैं लिखता हूं बड़े परम्यूटेशंस एंड आई कैन मेक अ छोटा परम्यूटेशंस एज वेल. तो मैं अलग अलग बना रहा हूं ताकि एक साथ दिख जाए. छोटे परम्यूटेशंस, ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया, छोटे परम्यूटेशंस बड़े परम्यूटेशंस. तो क्या करूं, यहाँ पे जब ये आ रहा है तो आई डोंट हैव टू प्रिंट इट नाउ, आई जस्ट हैव टू राइट बड़े छोटे परम्यूटेशंस डॉट पुश बैक द स्ट्रिंग y. छोटे परम्यूटेशंस इसमें डाल दो और आई राइट अगर वो मतलब बड़ा है, इफ y इज ग्रेटर देन x, तो वो मैं बड़े परम्यूटेशंस के अंदर डाल दूंगा. उसमें क्या है, अब ये वेक्टर्स के अंदर अगर कुछ चीजें नहीं पता है तो डोंट वरी, मैंने तुम्हें बेसिक चीज तो बता ही दी है कि हो क्या रहा है. बड़े परम्यूटेशंस को भी स्टोर कर लिया, छोटे परम्यूटेशंस को भी स्टोर कर लिया, सिर्फ एक वेक्टर ऐड और करके. वेक्टर के लिए हेडर फाइल लगती है दिस, बड़े परम्यूटेशन छोटे परम्यूटेशन स्टोर कर लिए. अब कोई बोलता है अलग से प्रिंट करो, तो मैं यहाँ पे जाके प्रिंट कर सकता हूँ आसानी से. मेरे को क्या है मतलब i इज लेस देन छोटे परम्यूटेशंस डॉट साइज, छोटे परम्यूटेशन डॉट साइज, और मैं पूरे छोटे परम्यूटेशंस को प्रिंट कर दूंगा. मतलब मुझे क्या है मतलब आई जस्ट हैव टू प्रिंट इट ना. मेरे को ऊपर लूप में प्रिंट करना है, बाहर प्रिंट करना है, दिस डिपेंड्स, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्वेश्चन करने को क्या बोल रहा है. अब ये है बड़े परम्यूटेशंस, यहाँ पे मैं पूरे बड़े परम्यूटेशंस को प्रिंट कर दूंगा. तो अब चला के देखते हैं भाई मतलब चलता है नहीं चलता, मतलब लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट. तो देख रहे हो अब मैंने ये व्हाइट स्पेस से सेपरेट करके प्रिंट कर दिए, सारे बड़े परम्यूटेशन स्टोर करके, सारे बड़े परम्यूटेशन स्टोर करके. तो अब स्टोर करने के बाद तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम कर सकते हो आसानी से. इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू इट. तो आई होप दैट एक क्वेश्चन किया उससे उसके वेरिएशन स्टोर करके किस तरीके से हम बना सकते हैं, यहाँ पे बेस केस में कंडीशन लगा के किस तरीके से कर सकते हैं, सबको समझ आया होगा. जावा में कैसे करें, जावा के अंदर आपके पास आई थिंक एरे लिस्ट होती है वेक्टर की, तो आप एरे लिस्ट बनाओ स्ट्रिंग की और उसके अंदर आप स्टोर करके कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं है. इफ वी डोंट वांट टू मेक वेक्टर ग्लोबली, ओके नवनीत सिंह सेज नहीं बनाना, तो नवनीत तुम इसको फिर आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हो, वेक्टर ग्लोबली नहीं बनाना. इफ यू डोंट वांट टू मेक देम ग्लोबली यू नीड टू पास देम इन द आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस. ये तुम्हें मैं इधर जो भेज रहा हूं छोटे परम्यूटेशंस, तो मुझे इसको बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा. बाय रेफरेंस पास कर दो यहाँ पे, बस खत्म. ये काम करा और नीचे मैं एक और यहाँ पे बड़े परम्यूटेशंस को पास कर दूंगा, छोटे परम्यूटेशंस भी आए, बड़े परम्यूटेशंस भी आ गए एंड काम खत्म. बाय रेफरेंस पास करना इज इंपॉर्टेंट, तो बाय रेफरेंस पास कर दो इसको और ये काम वैसे ही करेगा जिस तरीके से कर रहा है. अब मैं इसको उठा के यहाँ से ग्लोबल से हटा के यहाँ बना दूंगा और मैं यहाँ पे पहले छोटे परम्यूटेशंस हैं फिर मेरे बड़े परम्यूटेशंस हैं, तो ये भी काम कर जाएगी चीज. ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे भी
छोटे परम्यूटेशंस और बड़े परम्यूटेशंस को पास तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स में आ चुके हैं, अभी भी चल रहा है। तो तुम बाय रेफरेंस पास करके वेक्टर को एरे के अंदर भी ले सकते हो यहाँ पे ना। दिस विल ऑल्सो वर्क एज यू वांटेड टू। कौन सा आईडीई है ये? दिस इज सबलाइम टेक्स्ट। तो ये वाला जो मेरा आईडी है, दिस इज सबलाइम टेक्स्ट, तो आई राइट इट ओवर हियर। तो सबलाइम टेक्स्ट 3 इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज गुड आईडी फॉर सी प्लस प्लस, यू कैन यूज इट। ठीक है, और भी होते हैं, वीएस कोड कोई यूज करता है, कोई डेव सी प्लस प्लस यूज करता है, बट कोड ब्लॉक्स इज प्रेफर्ड ऑल्सो। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 प्रेफर करता हूँ फॉर सी प्लस प्लस। जावा में कैसे करें? जावा में आपको वैभवी थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा सिंटेक्स के बारे में, और उसके हो जाएगा। तो अच्छा, किसी ने बोला प्लीज डू मोर सेशंस लाइक दीज वंस, टोटली लव द टुडे सेशन। बाकी लोगों को कैसा लगा सेशन जो आज का था? प्लीज टेल। सर वाइट कैसे करा बैकग्राउंड? वाइट कैसे करा बैकग्राउंड? अच्छा, तो कमांड शिफ्ट पी दबा के आपका ये एक ऑप्शन खुलेगा। तो आई विल टेल यू ईच स्टेप्स। यहाँ पे जाना है आपको। लेट मी सी व्हाट इज दिस। कमांड शिफ्ट पी कहाँ गया? व्यू मैंने आई थिंक नहीं, फाइंड सिलेक्शन, मेरे को शॉर्टकट याद है, लेट मी फाइंड इट। हाँ, कमांड पैलेट खोल लो यहाँ से ना, ओपन द कमांड पैलेट, एंड यहाँ पे पहले करना इंस्टॉल, पैकेज कंट्रोल में इंस्टॉल, तो थीम्स आ जाती हैं। तो अगर तुम्हारे पे ऑलरेडी है ये थीम्स, देखो यूआई कलर थीम, तो कलर थीम होती है सिलेस्ट, ये ब्लैक हो जाता है, ये ऐसे ब्लैक हो जाएगा, इससे ये वाला व्हाइट हो जाएगा। आई एम यूजिंग सिलेस्ट। अगर तुम्हारे पास ये कलर थीम नहीं है तो तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसे ओपन करके इस वाले पैकेज को पहले इंस्टॉल कर लेना कलर थीम के। तो यू नीड टू इंस्टॉल पैकेज, क्लिक करोगे तो ये नीचे ना लोडर का आइकन घूमेगा, ये वाला ना, जब लोड हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना यूआई थीम, मेरे में इंस्टॉल्ड है तो मेरे में यहाँ दिखाएगा नहीं, तुम्हारे में यूआई थीम आएगी, उसको डाल लेना। जब वो डल जाए, इंस्टॉलेशन हो जाएगा कंप्लीट, तो एक आपकी ये विंडो खुलेगी, फिर से जाना इसके अंदर और यहाँ पे यूआई थीम सेलेक्ट करना। यूआई थीम सेलेक्ट करके जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम रख सकते हो। आई प्रेफर सेलेस्ट। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अब ये आपको लोगों को खुद से सोचना है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए? सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दैट शुड डू द वर्क। कैसा लगा आज आपको सेशन? मजा आ गया? ग्रेट, मजा आ गया, बढ़िया था। रैट इन मेज करा दीजिए। अच्छा, करा देंगे रैट इन मेज भी। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो वीडियो आएगी तुम्हें, तो तुम वहां से भी देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल होगी। तो आफ्टर दिस यू कैन एक्चुअली वॉच दिस वीडियो अगेन, वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। प्लीज एवरीवन टेल मी हाउ द सेशन वाज, ताकि मैं तुम लोगों के लिए ऐसे सेशन और लाऊं ना लाऊं, ताकि मुझे भी तो पता चले। जब तक मुझे ही नहीं पता तुम लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा, फिर क्या फायदा, मतलब ना, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फायदा, कि फायदा क्या है इस चीज का अगर तुम्हें मजा नहीं आएगा तो। डिड यू एंजॉयड द टुडे सेशन? आई लव्ड इट। मुझे मजा आया तुम लोगों के साथ बात करने में, बातें करने में। यू वर वेरी इंटरेक्टिव एंड आई डोंट, आप जावा पढ़ाते हो? नहीं वैभवी, आई डोंट टीच जावा, आई टीच सी प्लस प्लस। ओके, इट वाज नाइस सेशन, इट वाज ग्रेट। चलो तुम में से किसी को स्क्रीन पे शोकेस कर देते हैं। ओके, कीप टेकिंग सेशंस। तो चलो, अगर तुम चाहते हो ऐसे सेशंस लेते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल की वीडियो पे लाइक करो। सब लोगों को लाइक करना मैंडेटरी है, कुछ तुम्हारा जाना तो है नहीं लाइक करने पे, सब्सक्राइब करने पे भी तुम्हारा नहीं जाना। एंड अपने कॉलेज की कम्युनिटी में भी बता दो सबको कि ऐसे सेशंस होते हैं। एंड आई फील देयर आर मेनी स्टूडेंट दोज हु लैक गाइडेंस, और उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, गाइडेंस नहीं मिल पाती है टाइम पे जो उन्हें मिल सकती थी इफ दे हैड एन आइडिया उन्हें करना क्या था। तो इस तरीके से हो सकती हैं चीजें, राइट। और भी सेशंस मैं करा सकता हूँ सी प्लस प्लस में डेवलपमेंट से रिलेटेड। ओके, दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन डू, आई विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। डेवलपमेंट वाली चीजें भी देखो, मेन इज ये वाली चीज है, ठीक है। अब मैं एक चीज बस तुम्हें छोटी सी बताना चाहता हूँ, सो दैट एवरीवन शुड नो अबाउट दैट एज वेल, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स डू आस्क मी अबाउट इट। ओके, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ codingblocks.com, ओके, तो दिस इज आवर वेबसाइट एंड we also have a very good mentors team with us. So there are programs such as classroom courses, live courses, online courses. Live होता है जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी, उस तरह से चलेगा, like the way I am teaching you. Classroom courses are physical centers पे you have to visit and you have to
understand. So our batches are coming and they are starting soon, so you can go. And in case you have no idea what C++ is, so C++ Launchpad is the course for you guys, which you can start and you can learn. Java में सीखना है, कुछ नहीं आता, तो Java Crux is the thing which you can start with, because you all are beginners. Programming सीखना is mandatory, don't avoid it, ठीक है? This is really important. अब तुम्हारे जो भी सेशंस तुम्हें चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए हो सकते हैं, मैं भी टॉपिक्स खुद से सोच के लाता हूँ. इन केस यू वांट टू गिव मी सजेशंस, तो मैं एक नंबर भी टिपिकली दे देता हूँ अपना सब लोगों को. माय नंबर इज 9560196180. This is my personal number. My name is Kartik Mathur again. So you can actually contact me on WhatsApp. So आज मेरे से किसी ने बात करी थी जस्ट सेशन से पहले. एंड ओके, मैं कोड शेयर कर देता हूँ. तो कोडिंग ब्लॉक्स के आईडी पे जा सकते हो, cb.lk/ide. तो देखो जिस तरीके के मजे हैं, ये पूरे मजे तुम्हें और मिल सकते हैं. तो तुम देख सकते हो सेशंस में ज्वाइनिंग का, इफ यू आर इंटरेस्टेड. तो लेट मी सेव द कोड एंड आईडी पे जाके तुम ये कर सकते हो. तो अगली बार मैं तुम लोगों के लिए कुछ वो चीजें भी लेकर आऊंगा. तो मैंने कोड शेयर कर दिया है. दिस इज द लिंक टू द कोड विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. भैया कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का भी कोर्स है क्या ऋतिक? नो, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अभी तो एक सेकंड देखने दो. आई थिंक इंटरव्यू प्रेप लेवल अप कोर्स है एक. दिस इज समथिंग कॉम्पिटेटिव नहीं है. कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स इज ऑनलाइन राइट नाउ. तो ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स है, इसमें जाके तुम देख सकते हो. बट मोनू भैया का एक लेवल अप कोर्स भी आ रहा है विच इज क्वाइट चीप. 199 का ही है बस. जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है और वो सीखना चाहते हैं चीजें, तो ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है आई थिंक. और तुम लोग इसमें जाके कर सकते हो. तो 400 से ऊपर इसमें तुम्हें क्वेश्चन होंगे और बहुत सस्ता है, जस्ट फॉर हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड थिंग्स कैसे चलती हैं, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर, राइट. 20 सेशंस हैं एंड इसके अंदर पूरा तुम जीरो टू हीरो हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. कॉम्पिटेटिव का कोर्स अभी तुम ऑनलाइन देख सकते हो. अभी हमारा कॉम्पिटेटिव का कोर्स शायद एक स्टार्ट हो चुका है एंड आई विल प्लान समथिंग वेरी सून इन केस यू आर इंटरेस्टेड. हाँ, इंटरव्यू प्रेप शायद स्टार्ट हो चुका था तो मैं बता दूंगा. ठीक है, C++ में डेवलपमेंट के सेशन रख लीजिए, नोटेड, पॉइंट नोटेड. और आई विल ट्राई ये वाली चीजों को भी करने का. ठीक है, तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे. मतलब हम सेशन 1 घंटे से ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाह रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स पीपल डोंट लाइक टू सिट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. छोटे छोटे सेशंस में उन्हें मजा भी आता है, देखना भी आसान होता है. ठीक है, तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट. विल मीट अगेन वेरी सून. मैं प्रोबेबली ट्राई करूंगा दैट आई शुड कम एंड मीट यू गाइज एवरी वीक, इफ नॉट ट्वाइस देन एटलीस्ट वंस, है ना. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आइडियाज. तो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट आइडिया किस किस कोर्स में, कौन से कोर्स की बात कर रहे हो? मतलब वेब डेवलपमेंट के, या फिर तुम बात कर रहे हो एंड्रॉइड के? अगर तुम्हारा पॉइंट इज फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट चाहिए वेब में, तो ट्राई टू मेक समथिंग ऑफ योर ओन. तुम जैसे अगर किसी का भी क्लोन बना रहे हो, उसके अंदर अपने कुछ फीचर्स ऐड कर दो. जैसे व्हाट्सएप का क्लोन बनाओ. व्हाट्सएप के अंदर देयर इज नो फीचर जहां पे आप ग्रुप्स को एक साथ बाउंड करके सबको एक साथ मैसेज भेज सको. फॉरवर्ड करना पड़ता है ना, क्वाइट मतलब अच्छा नहीं लगता बार बार फॉरवर्ड करना हर एक को. तो ग्रुप्स को कैटेगराइज कर दो, जैसे एजुकेशनल ग्रुप्स, तो पूरे एजुकेशनल के अंदर जितने ग्रुप्स हैं सबके ऊपर मैसेज चला जाएगा, ऐसा कुछ बनाओ. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. तो इस तरीके से कुछ बनाना है. हाउ कैन आई यूज C++ विद वेब डेव? नो, C++ के अंदर तुम प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं सीखोगे. C++ में तुम प्रोग्रामिंग करना सीखोगे. और प्रोग्रामिंग जब तुम सीख जाओगे ना, प्रोग्रामिंग वाली चीजें तुम वेब डेवलपमेंट में यूज करते हो. मोनू भैया वाला जावा में है, नॉट सीपीपी. और मोनू भैया वाला इज नॉट समथिंग जो तुम्हें किसी लैंग्वेज को आना जरूरी है. वो एल्गोरिदम बेस्ड होगा. तुम्हें एल्गोरिदम बताई जाएगी, तुम C++ जानते हो जावा, उसके थ्रू इंप्लीमेंट कर लो, दैट्स इट. इस तरीके से काम होता है. जावा में है वो. और तुम लोग C++ कर रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें आनी चाहिए C++ पहले से और तुम कर लोगे. चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई विल मीट अगेन वेरी सून विद यू गाइस. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. स्टेटस डाल दो, जहां शेयर करना है सबको शेयर कर दो. लाल बटन पे सब्सक्राइब पे क्लिक करके लाइक कर दो. ठीक है, चलो बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता. चलो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.